Hi guys, good evening once again. I'm your host Dr. Seema Jain. I'm a SEBI registered research analyst. I'm chief mentor and founder at StockPro. I'm partner with Zerodha Upstocks Fires and Astha Trade. And right now it's about 7:16 p.m. and today's 7th of October 2021. So this is my second video today. First video I made on Nifty's option chain and I made it on one particular FNO stock that I had given, right? I'm making another video which is basically going to talk about one stock which had been a very, very beautiful stock today. And this is the stock. I'm just going to show you name in a minute, but this is how it looks like. So the stock has been consolidating for a long time, right? If you see here, stock has been consolidating for a long time, right? See, this is how stock has been consolidating, and today it has given a breakout and it is on a place where it has taken a resistance earlier. ये उसी जगह पे आज बंद हुआ है जहां पे इसने पहले रेजिस्टेंस दिया था. आप इसमें कल एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देख सकते हैं. और ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि इसको आपको कुछ दिनों के लिए होल्ड करना है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लेके डाल सकते हैं, राइट? ये एक मल्टी बैगर होगा. मल्टी बैगर मीन्स कि अगर अभी इसकी कीमत करीब 2000 रुपये है तो आप इसमें एक 5000 का टारगेट रख के चलिए और 3 महीने का होराइजन रख के, नहीं 6 महीने का कम से कम इसमें होराइजन रख के चलिए. 100% से ज्यादा का रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ, राइट? आई मे बी रॉन्ग बट व्हाट आई एम सेइंग, जो मैंने इसका डेटा रीड किया है, जो मैंने इसका चार्ट पैटर्न रीड किया है, जो मैंने इसके बारे में सब कुछ जाना है, उसके हिसाब से मुझे यही समझ में आता है कि ये जो स्टॉक है ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाला है, राइट? तो अब चलते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं. सो द फंडामेंटल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, लेट मी जस्ट शो यू. This stock's name is Nureka Limited, right? The stock name is Nureka Limited. ये 11654 करोड़ की कंपनी है. स्टॉक का पी 35 है. ROCE, इससे बेहतर आपको ROCE कहीं नहीं मिलेगा. 67% है. ROE is 52%. What do you want? इससे बेटर ROE and ROCE आपको नहीं मिलेगा कहीं भी. और प्रोज क्या है कंपनी की? कंपनी हैज रिड्यूस द डेट, कंपनी हैज ऑलमोस्ट बीन डेट फ्री, कंपनी हैज गुड रिटर्न एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 54.78%. स्टॉक एक जो इसका कौन है वो यही कि ये 10 टाइम्स से ज्यादा की वैल्यू पे ऑपरेट कर रहा है, राइट? अब हम इसको कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स से, राइट? ये एक कंपैरिजन बहुत जरूरी होता है. आप देखो किसी भी इसके कंपटीटर के पास ये मार्केट कैप नहीं है. कोई 2 करोड़ का है, कोई 3 करोड़ का है, कोई 26 करोड़ का है. पी वैल्यू डेफिनेटली हाई है बट दैट्स ओके. मार्केट कैप आई टोल्ड नो, करंट मार्केट प्राइस, ये सॉरी मार्केट कैप नहीं है, करंट मार्केट प्राइस है, ये मार्केट कैप है. कोई भी मार्केट कैप इसके कंपैरिजन में इक्वल नहीं है. डिविडेंड यील्ड इज थोड़ा कम है बट नॉट बैड. देन क्वार्टरली प्रॉफिट्स ये रहे. सेल्स वैल्यू 119 करोड़, क्वार्टरली सेल्स एंड ROC. देखिए ये सेल है, ये प्रॉफिट है और ये ROCE है. और ब्यूटीफुल नंबर्स, राइट? एंड स्टॉक मार्केट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स. Now let's talk about their sales. कि sales में कोई growth हुई है क्या? There has been a massive growth. Look at this. This is March 2021. This is June 2021. 32 crore से 119. What a huge jump, right? Operating profit margins are definitely very, very good. Then we talk about the expenses. 213 करोड़ की एक्सपेंसेस सेल्स है और 152 करोड़ की एक्सपेंसेस है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर 29%. नाउ लेट्स हैव अ लुक कि इनके रिजर्व्स क्या कहते हैं. इनके पास 153 करोड़ के रिजर्व्स है, राइट? और बोरोइंग कितनी है? 3. नेग्लिजिबल, राइट? अगर कंपनी 3 करोड़ कल चाहे किसी भी मिनट चाहे दे सकती है और डेट फ्री हो सकती है, 100% डेट फ्री हो सकती है. अब जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है कि कैश फ्लो, जब कैश फ्लो आता है, राइट? जब कैश फ्लो आता है किसी कंपनी में तो उस कंपनी का इसका मतलब कि कंपनी में अच्छा खासा काम हो रहा है. और फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज -110 एंड अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स 109 करोड़ जो है वो इन्वेस्टेड है.
and then cash from financing activities 92 crores. So overall still there is a cash in this company. नाउ एक और बहुत अच्छा पॉइंट जो इस कंपनी के बारे में है वो ये कि डेटर डेज 365 डेज से 86 हुए, 86 से 65 से 65 से 46 एंड नाउ केवल 6 डेज हो गए, राइट, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, राइट. देन कैश कन्वर्जन साइकिल, राइट, ये देखो 365 days से it has become 109 days. And just have a look at ROCE, beautiful ROCE, right. So now let's look into कि FIS का promoters की holding कितनी है, 10%, 70% है. FIS की holding का क्या हुआ है, 10% से 12% हुई है, थोड़ी ज्यादा हुई है. DIS की holding थोड़ी नीचे गई है, but and public holding is about 11.4 से थोड़ी नीचे गई है, but that's okay. FIRs are increasing, right? So this is a stock which is looking extremely beautiful to me. And have a look at its company, this company Feel. This is the company's website. I'm on Nureka. Feel, think, feel, create, right? We think our senses, feel our mind, and create with a purpose to make people healthier, happier through our products and technology. So see, guys, what I really liked about the company, कि as and when after the pandemic, इस पैंडेमिक के बाद ऐसी सिचुएशन बन गई है कि हर एक को एक मेडिकल हेल्प की जरूरत है किसी ना किसी तरीके से. कोई, किसी का ब्लड शुगर हाई है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को different different problems, and people want to be tech savvy. मतलब they want to monitor their body throughout the day, and they want to see what is going on in their life. So what this company does is make equipments which can help you uh, be alerted all the time about what's going on in your body, right? हर समय आपकी बॉडी में क्या हो रहा है वो सब इन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए हैं जो कि आपको उनके बारे में अलर्ट करते हैं. तो now they're talking about chronic diseases, ortho care, lifestyle and fitness, mother and baby. So I was just going through their innovations that they had. First that they talked about is a BP monitor which speaks to you in Hindi. Imagine एक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ इट इज हिंदी स्पोकन, राइट, हिंदी बेल्ट है, एटलीस्ट हिंदी सबको दूर दूर तक समझ में आती है. और अगर आपको एक बीपी मॉनिटर मिल जाता है जो आपसे हिंदी में बात करे, लाइक वो बताता है आपको कि अब आपका बीपी हाई हो रहा है, आपका बीपी लो हो रहा है, इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड वैल्यू विल इट हैव. Then the next product that they have is accuracy that can avert emergencies, right? So this is their pulse oximeter, right? With corona, I think oximeters are in great demand. People want to know what's happening in their body, what kind of oxygen levels do they have. So that's the other product that they have. Then health in your pocket, right? So our portable ECG machine performs a 12-point ECG process and records heart rhythm, ECG, and wave data in smartphone via Bluetooth, which can be shared instantly with healthcare provider. What a great innovation, imagine. And let's see what is the cost. If I go and buy this, it is only 6,000 rupees, affordable by anybody, right? Let me just have a look at this product. What is the cost of oximeter? Because I remember मैंने कुछ ऐसे 2800 रुपए का खरीदा था, तो ये 2660 का है, बट वो चाइनीज था, बिकॉज उस समय कोई और अवेलेबल नहीं थे, केवल चाइनीज ही अवेलेबल थे. बट इमेजिन दिस इज अगेन बीपी मॉनिटर है 3000 रुपीज का. सो आई डोंट नो आप लोगों को कितना पता है, नहीं, बिकॉज मेरे घर में 2 ओल्ड पेरेंट्स हैं और मुझे हमेशा कभी बीपी मॉनिटर की, कभी ग्लूको मॉनिटर की, कभी ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती रहती है. तो मुझे कॉस्ट पता है और मुझे ये पता है कि हाउ क्विकली दे गो आउट ऑफ stock. Imagine a company making this, and the demand is going to just increase because everybody would like to be tech savvy and well equipped to deal with the challenge, right? So I have all of it, like I have the oximeter with me, I have the BP monitor with me, I have the sugar monitor with me, all it. And trust me, when I bought them about 2 years back, I wanted to buy Indian company, right? But I couldn't find a decent Indian company. But I find the products listed here looks very very promising, and I think there's a huge, India is just going to blast
like this, the products, you know, are just going to be hot cake, right? And have a look at the stock, you know, which I showed you today had a breakout. This stock had a breakout today. uh, just a sec. So if you have a look at it today, in today's this thing, the stock had overcome this range, you know, which was basically um, which was where it was consolidating for almost like May, June, July, August, September, right? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने कंसोलिडेट करके आज ब्रेकआउट दिया है। तो हम इसको कहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये जोन हमारा बाइंग के लिए है इसका, विच इज राइट हियर। कल खुलने के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं, और ये ऐसा स्टॉक है कि आपको बेचना नहीं है, राइट? यू डोंट हैव टू सेल, you have to just keep on accumulating at the lower levels, right? I have shown you its fundamentals. They are just outstanding. Fundamentals are just outstanding, and I feel that with such fundamentals the company is going to grow. What a fundamental analysts look for: ROC and ROE. If they are good and cash rich, you saw the reserves, you saw the uh, company's cash rich, and this is which company? Nureka, right? And look at the operating profit margins. They have grown almost like from here to here 3 times, right? Beauty, what a beauty it is, right? And similarly, operating profit margin year on year have increased from 349% to 29%, right? So this company is a company which you should not leave at all. This should be in your portfolio. One of the best company for it is going to have huge growth, you know, after China. I know for a fact, if you look into the medical devices, either you will go for German devices or you will go for Chinese devices. Chinese are very, very cheap, but European and American devices are very expensive. If we have an Indian company and if they maintain quality, there is no way the company is not going to grow, right? So I yet to have come across their products, but I can vouch for it by looking at it, by looking at the cost and everything. It looks very promising to me. People have given 4.5 stars here, 4.5 stars here, and 4.5 stars here. So as and when more people will use it, I'm sure their credibility, their product designing, their deliverability, their after sales service, everything is going to increase. And I'm betting on this company to give me, like, if you have a look, you know, the price, the company, the price of the wait a sec. Here is the company's this thing. I'm telling you right now, it's at 1950. My target for this company is going to be 5,000 rupees, but not right now. This is the area where I'm looking the price to reach, but not today. I'm expecting this distance to be covered in, let's say, another 6 to 8 months, right? Keep my words, mind my words, keep the stock on your radar, keep accumulating. Volumes have appeared today. If the high is broken tomorrow, you can go for it. Hold it for 6 months. From 2,000 to 5,000 is my target. And you know, when I give target, they all targets me, right? Take care. I just wanted to show this beautiful trade with you, beautiful stock with you. And this company has been launched its IPO in March, in February 2021, right? From February 2021, 644 से already 2000 हो गया. Imagine in 6 months the price has grown 3 times. What more? You can definitely expect it to be reaching a target of 5,000. So with this, I'm signing off. Hope you're liking my videos. If you like, please give a thumbs up and subscribe to the channel and share the channel with others so that many more people can be benefited. Take care. Bye bye. See you tomorrow.